हेलो गाइस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 8 का एक्सेस एग्जाम 8.3 जो कि है इनर्शिया एंड मास। अब इससे पहले वीडियो में हम 8.1 और 8.2 एंड इंट्रोडक्शन हम पढ़ चुके हैं। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं इससे आगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, अब 8.3 Inertia and Mass. All the examples and activities given so far illustrate that there is a resistance offered by an object to change its states of motion. If it is at rest, it tends to remain at rest. If it is moving, it tends to keep moving. This property of an object is called its inertia. Do all bodies have the same inertia? We know that it is easier to push an empty box than a box full of books. Similarly, if we kick a football, it flies away. But if we kick a stone of the same size with equal force, it hardly moves. We may, in fact, get an injury in our foot while doing so. Similarly, in activity 8.2, instead of a 5 rupees coin, if we a 1 rupee coin find that a lesser force is required to perform the activity, a force that is just enough to cause a small car to pick up and lesser force is required to perform the activity, a force that is just enough to cause a small car to pick up a large velocity will produce a negligible change in the motion of train. This is because in comparison to the cart and train has much lesser tendency to change its state of motion. Accordingly, we say that the train has more inertia than the cart. Clearly, heavier or more massive object offer large inertia. Quantitatively, the inertia of an object is measured by its mass. We may thus relate inertia and mass as follows. Inertia is the natural tendency of an object to resist a change in its state of motion or of the rest. The mass of an object is a measure of its inertia. जड़त्व तथा द्रव्यमान। अभी तक दिए सभी उदाहरणों और गतिविधियों से ज्ञात होता है कि प्रत्येक वस्तु अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करते हैं, चाहे वह विरामावस्था में हो या गतिशील। वह अपनी मूल अवस्था को बनाए रखना चाहते हैं। वस्तु का यह गुण उसका जड़त्व कहलाता है। क्या सभी वस्तुओं का जड़त्व समान होता है? हम जानते हैं अपनी मूल अवस्था को बनाए रखना चाहती है। वस्तु का यह गुण उसका जड़त्व कहलाता है। क्या सभी वस्तुओं का जड़त्व समान होता है? हम जानते हैं कि पुस्तकों से भरे बक्से को धक्का देने की अपेक्षा खाली बक्से को धक्का देना आसान होता है। उसी प्रकार हम एक फुटबॉल को किक लगाते हैं तो वह दूर चली जाती है, जबकि अगर हम उतने ही बल से किसी उतने ही बड़े पत्थर पर किक लगाएं तो हो सकता है कि वह खिसके भी नहीं। हो सकता है कि ऐसा करते समय हमें ही चोट लग जाए। क्रियाकलाप 8.2 में हम 5 रुपये से
के सिक्के के स्थान पर यदि उसी क्रिया को करने में हमें बल की आवश्यकता होती है। एक रेलगाड़ी को चलाने के लिए जितने बल की आवश्यकता होती है, उतना बल यदि किसी रेलगाड़ी पर लगाया जाए तो उसकी गति में न के बराबर परिवर्तन होगी, क्योंकि ठेलगाड़ी की तुलना में रेलगाड़ी अपनी गति में कम परिवर्तन चाहती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रेलगाड़ी का जड़त्व ठेलगाड़ी से अधिक है। इससे स्पष्ट है कि भारी वस्तुओं का जड़त्व अधिक होता है। मात्रात्मक रूप से किसी वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान से मापा जाता है। अतः हम जड़त्व और द्रव्यमान के निम्न रूप में परिभाषित कर सकते हैं। किसी भी वस्तु का जड़त्व उसका वह प्राकृतिक गुण है जो उसकी विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। इस प्रकार किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है। अब second law of motion. The first law of motion indicates that when an unbalanced external force acts on an object, its velocity changes, that is, the object gets an acceleration. We would now like to study how the acceleration of an object depends on the force applied to it and how we measure a force. Let us recount some observations from our everyday life. During the game of table tennis, if the ball hits a player, it does not uh, hurt him. On the other hand, when a fast moving cricket ball hits a spectator, it may hurt him. A truck at rest does not require any attention when parked along a roadside, but a moving truck, even at a speed as low as 5 meter per second minus 1, may kill a person standing in its path. A small mass such as bullet may kill a person when fired from a gun. This observation suggests that the impact produced by the objects depends on their mass and velocity. Similarly, if an object is to be accelerated, we know that a greater force is required to give a greater velocity. In other words, there appears to exist some quantity of importance that combines the object's mass and its velocities. One such property called momentum was introduced by Newton. The momentum p of an object is defined as the product of its mass m in velocity v, that is p equals to mv. Momentum has been momentum has both direction and magnitude. Its direction is the same as that of velocity v. The SI unit of momentum is kilogram meter per second, kgms minus 1. Since the application of an unbalanced force brings a change in the velocity of the object, it is therefore clear that a force also produces a change of momentum. Let us consider a situation in I'll start, but a continuous push
over some time result in a gradual acceleration of the car to the speed. It means that the change of momentum of the car is not only determined by the magnitude of the force but also by the time during which the force is exerted. It may then also be concluded that the force necessary to change the movement of an object depends on the time rate at which the momentum is changed. The second law of motion states that the rate of change of momentum of an object is proportional to the applied unbalanced force in the direction of force. 8.4 गति का द्वितीय नियम। गति का प्रथम नियम यह बताता है कि जब असंतुलित प्रवाह बल किसी वस्तु पर कार्य करता है तो उसके वेग में परिवर्तन होता है, अर्थात वस्तु त्वरण प्राप्त करती है। अब हम देखेंगे कि किसी वस्तु का